हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानोमी। मेरा नाम उजैर यूनुस है और आज इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड आई वुड से इन द सेंस के मेरे साथ जो मौजूद हैं आई थिंक मेरे बचपन के दोस्त, गेमिंग पार्टनर, फुटबॉल पार्टनर, मैन यूनाइटेड फैन जिस पे बड़े फड्डे भी हो चुके हैं, और अब पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर एट द इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल सिस्टम्स इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग इन जर्मनी, डॉक्टर बिलाल खत्री। काफ़ी सारे आप लोगों के प्राइवेट जब मैसेजेस आते हैं तो लोग पूछ रहे होते हैं, अच्छा मैं मास्टर्स का सोच रहा हूँ, अंडरग्रेड का सोच रहा हूँ, कहाँ जाना चाहिए पढ़ने के लिए, क्या सोचना चाहिए एक्सेट्रा। तो मैं सोचा आज बिलाल से बात की जाए, क्योंकि बिलाल इज़ परहैप्स, एज आई ऑफ्टन टेल हिम एंड अ लॉट ऑफ माय अदर फ्रेंड्स, द स्मार्टेस्ट मैन दैट आई नो। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च की है, ही इज़ अ साइंटिस्ट। उस पर बात करेंगे, इकरा यूनिवर्सिटी से फ्राइबर्ग कैसे पहुंचे उस पर बात करेंगे। But just to give you a quick background, Bilal completed his bachelor's in electronic engineering from Iqra, and then his master's in microsystems engineering from the University of Freiburg. 2019 में उन्होंने PhD अपना कंप्लीट किया, जहां उन्होंने फंक्शनल कंपोजिट मटेरियल्स फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसे मेरे जैसे लोग 3D प्रिंटिंग कहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजीज में PhD किया। और उसके बाद से जो है वो फ्राइबर्ग में काम कर रहे हैं, where he's working on additive manufacturing, hybrid and composite materials, more sustainable materials and processes related to circular strategies for materials used in automotive and aerospace sectors। यानी कि दुनिया की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी किरदार अदा कर रहे हैं बिलाल। तो उस पर भी बात करेंगे कि किस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है एंड हाउ इट्स रेलिवेंट टू अ कंट्री लाइक पाकिस्तान और टू इमर्जिंग मार्केट्स। को 40% आप में से जो सुनने वाले हैं वो इंडिया से भी हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। तो पहले तो बिलाल, वेलकम फाइनली टू पाकिस्तानोमी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। और इतनी ज्यादा तारीफ तो मैंने मतलब रियल लाइफ में कभी सुनी नहीं है तुम्हारे मुंह से, मगर पॉडकास्ट इट्स पॉडकास्ट के लिए सब सेव कर रहा था। no, it's a pleasure to be here. I must say, for people like me who are very specific in one field, your podcast has been a revelation in many ways, understanding things that I have no idea about, like डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानी रुपये के खिलाफ वगैरह. It's something that not all of us get. And your podcast has been very, very helpful to me in the past year, especially to keep up the tabs with what's going on in Pakistan as well. But thanks for having me. नो, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम, और आई एम ग्लैड दैट यू फाइंड इट यूजफुल। एंड आई थिंक आज एक ज़रा डिफरेंट सी कॉन्वर्जेशन होगी, क्योंकि साइंसेस के ऊपर ऑब्वियसली ऑन दिस पॉडकास्ट आई स्पीक टू पीपल ऑन AI, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, बट नॉट ऑन द हार्ड साइंसेस। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। बट पहले तो शुरू करते हैं कि वेरी फ्यू पीपल पाकिस्तान में पढ़ाई के अंदर जो है वो इस तरह की फील्ड में जाते हैं जिसमें आप गए। यू डिड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इकरा से, DJ साइंस कॉलेज इकरा। तो पहले तो अपनी ज़रा जर्नी के बारे में लोगों को बताएं कि क्या वो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से यू एंडेड अप वेयर यू आर, लाइक व्हाट वाज इट अबाउट द वे यू वर स्टडीइंग, थिंग्स यू वर एक्सपोज टू एक्सेट्रा, दैट यू एंडेड अप इन Mm-hmm. सच अ यूनिक, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंजीनियर अगर आप बनते भी हैं तो इस तरह की फील्ड में नहीं जाते। डॉक्टर, लॉयर, पॉलिसी में बहुत कम लोग जाते हैं। तो हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड वेयर यू एंडेड अप एंड हाउ यू एंडेड अप वेयर यू आर। Yeah, it's something that I look back on as well, and a lot of that I attribute to chance, even sometimes. But I was always interested in science. Growing up in school, मेरा favorite subject जो था वो chemistry था, physics था. मुझे इंटर में मेरे सबसे अच्छे नंबर वगैरह भी उसी में आ रहे होते थे, मैट्रिक इंटर वगैरह में. And I was always interested in technology. I mean, we grew up together, तो हम लोग गेमिंग शेमिंग साथ करते थे, लेकिन सिर्फ गेमिंग नहीं होती थी, कंप्यूटर्स भी मॉडिफाई हो रहे हैं, जुगाड़ शुगाड़ कर रहे हैं गेमों के अंदर, तीन चीजें पंखे वगैरह. लगे हुए हैं पीछे गर्मी के अंदर ठंडा रखने के लिए। एग्जैक्टली गर्मी के 40 डिग्री में अपने ग्राफिक कार्ड को कैसे ठंडा रखना, उसके जुगाड़ चल रहे हैं. और उसके अलावा मतलब हमने साथ में एक दो छोटे मोटे वेंचर्स भी किए थे बैक इन द डे, पता लगाओ वगैरह किया था. तो देयर वाज ऑलवेज दिस टेक, anything tech related I was really into. During my time at Ikra, something like जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ, सही. I was gathering knowledge, I was gaining a lot of knowledge about electronics, telecommunication वगैरह. लेकिन उसमें दो चीज़ें साथ में चल रही थी मेरे. वो ये था कि
एक तो a diversified group of friends which includes you and a lot of our mutual friends. I mean, हमारे जितने close friend circle है उसमें I'm probably the only engineer or pure science guy. तो उससे मेरा एक एक्सपोजर बाहर एक अलग रहता था. आई हैड पर्सपेक्टिव. आई वाज इन टनल विजनिंग इनटू जो मैं कर रहा हूँ वही करना है और फिर जॉब पकड़नी है. और दूसरा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय बैचलर्स आई स्टार्टेड एक दोस्त की बहन को फिजिक्स पढ़ाना एट देयर प्लेस. और उनकी जो अम्मी थी वो शी वाज अ टीचर इन अ स्कूल. तो उन्होंने जब मुझे पढ़ाते हुए देखा तो उन्होंने मुझे और स्टूडेंट्स रेकमेंड किए. At the end, I ended up teaching at this evening, we call them tuition centers in Karachi. तो उस दौरान में मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहा था, equivalent to a bachelor thesis. And during that time I realized कि यार ये लाइफ बड़ी अच्छी है कि मैं अपना जाके कुछ काम कर रहा हूँ. I mean what I did there, मैं अब उससे different kind of research करता हूँ. मगर उस वक्त वो मेरे सामने था कि मैं एक चीज़ डेवलप कर रहा हूँ एक जगह, और शाम में जाके मैं जी 5-6 घंटे अलग अलग जगहों पे जाके और अपना नॉलेज इम्पार्ट कर रहा हूँ, which I really had fun doing. तो उस वक्त मेरे लिए थोड़ा सा क्लैरिटी आई कि यार दिस इज अ करियर पाथ आई वांट टू टेक. एंड हु डज दिस काइंड ऑफ थिंग, हु डज like projects on science and then goes and teaches. So मेरा उस वक्त आइडिया था कि प्रोफेसर्स ये काम करते हैं. So that pretty much set me on that path. And then after I finished my bachelor's, मैंने apply करना वगैरह शुरू किया. कुछ जगहों पे एडमिशन मिला जहाँ पे ट्यूशन ज़्यादा होती है तो नहीं जा सके. यूरोप का ये फ़ायदा है कि मोस्टली इट्स वेरी लो कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन. यू जस्ट हैव टू डू आपके लिविंग एक्सपेंसेस का आपने ख्याल रखना है, अपनी इंश्योरेंसेस वगैरह करनी है, लेकिन आपको पढ़ाई करने के इतने पैसे नहीं देने होते. तो उस चक्कर में I ended up applying to Freiburg, which is incidentally the place where my dad also went to school in the 60s. वो डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन यहाँ से पढ़ी थी. काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है ये, 1450 से यूनिवर्सिटी कायम है यहाँ पे. एंड इंजीनियरिंग नहीं है बल्कि. तो as soon as I got a yes from them, मैंने कहा सही है अब मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जी फीस भी आपकी 150 यूरो पर सेमेस्टर है, which is much less than what I paid at ICRA. बिकॉज उस वक्त मैं जब इकरा में था मेरे बैच में 15 लोग थे. लाइक इंजीनियरिंग आई थिंक उनकी एचईसी और पीईसी की रिकग्निशन वाज ड्यूरिंग माय टाइम देयर, सो दे weren't even a recognized place in for engineering from the higher education commission when I joined. तो उसके बाद से एक बहुत बड़ा जंप था. तो इट वाज इनहेरेंट फॉर मी. मैंने हमेशा से, मुझे शौक था ये चीज़ें करने का. सोल्डरिंग करवा लें आप मुझसे 2-3 घंटे, मैं मेडिटेटिव स्टेट में चले जाता हूँ, ये वगैरह था. और ऊपर से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो आई फेल्ट लाइक यार ये कॉम्बिनेशन बड़ा फिट है. तो दैट्स व्हाट पुट मी ऑन दिस पाथ. इट्स एसेंशियली, या इट वाज वेरी इनहेरेंट मोटिवेशन. तो उस पे फिर आई नो कि जर्मनी जाने के लिए लैंग्वेज वी टुक क्लासेस टुगेदर एज वेल. उसका प्रोसेस, नाउ दैट यू लुक बैक ऑन द जर्नी टू जर्मनी, राइट? मैं अमेरिका गया व्हेन आई वाज 18 barely. It's a different phase of life. आप ज़्यादा malleable होते हो. You're not set in the Pakistani way, or up in a new environment you can adjust. But as you were making the transition to Germany, now that you look back, बिकॉज काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं जो बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं यूरोप के अंदर. इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चर, पर्टिकुलरली a place like Germany. So what are some things that now stand out to you in terms of, your younger self perhaps had known things would have been a bit different, or you would have adjusted better? And I asked this question primarily ताकि जो audience में, it's mostly the analytics tell me it's mostly under 30 years old, right? उनमें से अगर can learn from your experience about how to think about transitioning into particularly a European context of studying and settling in. Yeah, you hit the nail on the head with the word malleable. क्योंकि आपके यहाँ पे compared to English speaking countries फर्क ये है बड़ा कि जहाँ पे English speaking countries हैं वहाँ पे हमारी जैसी community है. ज़्यादातर जगहों पे देसी कम्युनिटी आपको मिल जाएगी. आप लंदन जैसी जगह में एक माइक्रोकॉज्म के अंदर भी आप रह सकते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल आपको बाहर के लोगों से, आप अपने ही लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट द केस. वो शायद बर्लिन में होता है, शायद क्या होता है, इस तरह के माइक्रोकॉज्म्स हैं. यहाँ पे टर्किश पॉपुलेशन हैं ऐसी जिनके होते हैं, लेकिन द प्लेस आई लिव इन यहाँ पे 2.5 लाख लोग हैं. तो मैलिएबिलिटी इज एवरीथिंग. बिकॉज आपने यहाँ आके और अगर एक चीज पे फोकस किया हुआ है कि मुझे जी मास्टर्स करना है अब,
तो यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, यू हैव टू डील विद कि आपकी सही है पढ़ाई तो हो रही है आपकी इंग्लिश में, आपके सारे लेक्चर्स इंग्लिश में हो रहे हैं, आपने अपनी थीसिस भी इंग्लिश में लिख दी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आपके जो शाम में लैंडलॉर्ड से बात होगी, आपका कमरा है उसका रेंट बढ़ाना है आपने, या कुछ भी करना है, यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। दैट इज व्हाट आई फेल्ट लाइक के करना चाहिए उस वक्त, और बहुत अच्छा डिसीजन था। आई लर्नड इट ऑर्गेनिकली, मैंने बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं ली, आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग इट, लिसनिंग। लेकिन अभी लुकिंग बैक ऑन दैट, उसमें अगर आपने यहाँ पे रहना है, और जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज इन यूरोप। आप फ्रांस ले लें, कुछ कंट्रीज हैं नेदरलैंड, स्कैंडिनेविया, वहाँ पे इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, मगर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप डिसएडवांटेज में हैं। हमारे मेरी एक फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाइडन इन द नेदरलैंड्स, वहां से साइकोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया, एंड देन शी वांटेड टू लिव इन एम्स्टर्डम या फिर नेदरलैंड्स में कहीं पे। अब साइकोलॉजी में मास्टर्स किया इंग्लिश में, शी इज अमेजिंग एट व्हाट शी डज, बट जब उनको काम करना है तो उनके पेशेंट्स जो होंगे या उनके क्लाइंट्स जो होंगे वो लोकल लैंग्वेज बोलेंगे, तो यू कांट रियली गेट अराउंड दैट। तो डाइव इन हेड फर्स्ट वाला जो सीन होता है ना, वो करना होता है आपने, और अपना लैंग्वेज को आपने अपनाना है अगर आपने यहाँ पे अपनी फ्यूचर भी बनानी है। यहाँ से अगर पढ़ाई करके आपने जाना है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स कर लें, वो मास्टर्स प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, लेकिन लैंग्वेज को सीखना बहुत अच्छा होता है ऑन अ पर्सनल लेवल, एंड यू नो मी सो वेल, यू नो दिस, कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टीचेस यू अ न्यू वे टू थिंक, राइट? मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, अभी मैं आपको विजिट करने आया था, I sometimes like don't have the right words in English or Urdu कि मैं आपको कोई एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, तो स्पेशली टेक्निकल में, क्योंकि अब मैं पूरा जर्मन में मेरा काम होता है, तो इट जस्ट टीचेस यू अ न्यू वे टू थिंक, एंड इट जस्ट उसमें जो ग्रोथ होती है आपकी वो बड़ी अच्छी होती है। और जो हमारे इंडियंस पाकिस्तानी, आई डोंट नो अबाउट इंडियंस दैट मच, बट पाकिस्तानी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि एक और जबान सीखने से और ऐसे एनवायरनमेंट में रहने से आपको, मेरे सर से तो एक वो ग्लास सीलिंग टूटी कि यार इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, एक जबान ही है सिर्फ, जो एक हड़ाउड़ी मची हुई होती है इंग्लिश पे, वो टूट गई दिमाग से। तो लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैलिएबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, आपने अपने बाउंड्रीज आपको पता है, आपने क्या कहाँ तक जाना है, क्या करना है, इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चर, एंड यू हैव टू यू नो क्रिएट योर ओन बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज रखें आप, और लेकिन यू हैव टू लिव वेयर यू आर लिविंग। अगर आप 5-6 साल एक जगह गुजार रहे हैं तो यू कांट जस्ट आइसोलेट योरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस, या। So in terms of education as well, of course, bachelor करके Pakistan से you came out of engineering and now you were in Freiburg studying engineering as well, doing your masters. And of course, मेरा experience US का है, 18 years old again for undergrad, but still the teaching culture was very different. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भाई कॉलेज के अंदर एक एडवाइजर होता है जिसका काम होता है आपको समझना, आपसे इंटरेस्ट के बारे में पूछना और फिर बताना कि क्या आप कर सकते हैं। कोई एक लीनियर पाथ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पाकिस्तान में एटलीस्ट आई वाज नॉट एक्सपोज टू इट। सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक इन टर्म्स ऑफ studying at a Pakistani university and then going into staying in the hard sciences, going into Germany, new language, new culture, but educationally what was it like, and what wowed you, right? Because you stayed, you did your PhD and then you're still there. तो कैसा Yeah. वो था एक्सपीरियंस? या इट्स आई मीन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो अगर आप इकरा और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग को कंपेयर करें तो टीचिंग मेथड्स में नाइट एंड डे का फर्क है। यू नो योर अभी मैं पोस्ट डॉक जब मैंने शुरू किया तो आई स्टार्टेड आल्सो टीचिंग, तो मुझे उसके लिए कुछ कोर्सेज करने पड़े, उनको कहते हैं यूनिवर्सिटी डिडैक्टिक कोर्सेज, आपने पढ़ाना किस तरह से यूनिवर्सिटी में। तो उसमें पहली स्लाइड थी कि पुराना प्रिंसिपल एक होता था, न्यूरनबर्गर प्रिंसिपल कहते हैं, न्यूरनबर्ग से कोई उनका ताल्लुक था जो कि अब यूज नहीं किया जाता। उसकी रिप्रेजेंटेशन थी कि एक प्रोफेसर खड़ा हुआ है स्टूडेंट के ऊपर, और स्टूडेंट के सर में एक कुप्पी लगी हुई है, एक फनल लगा हुआ है, और उसके अंदर नॉलेज पोर करे जा रहे हैं वो। तो दैट वाज इक्विवेलेंट टू हाउ आई फेल्ट कि जी आपने पढ़ना है, करना है और एग्जाम पास करना है और अच्छा ग्रेड ला के लेना है ताकि आप आगे जाएं। रट्टा दैट वाज द लगा के सिस्टम जो है देयर। आगे बढ़ना है। रट्टा लगा के, या इंजीनियरिंग साइंसेज में आप बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगा सकते, आपने समझना पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि जी ये रिस्ट्रिक्शंस यही हैं, इस मैथ को मैं टैकल कर सकता हूँ और आगे नहीं करना चाहता। Whereas over here, यार different professors have different groups, और हर प्रोफेसर की आप क्लास ले रहे हैं,
पहले साल में आपके कंपल्सरी कोर्सेज हैं, you're not deciding on anything. Second year of masters, you're taking whatever you like. तो उसमें मैं उस दौरान में मैं मटेरियल साइंसेस में घुस गया. Even though my engineering is microsystems engineering, my focus is on materials. And that was my choice. And I was like, okay, ये field मुझे attract करी. And like you said, मेरे भी एक advisor थे जिन्होंने मुझे बोला, because it was a big thing for me. मैं electrical से जा रहा हूँ, and materials in engineering is based in more mechanical engineering. It's not based in electrical or electronic engineering. So it was a big step for me back then. लेकिन एक आपको environment ऐसा बना के दिया जाता है कि जी ये लोग हैं आपके, और ये आपको feed नहीं कर रहे हैं कुछ. A lot of my exams were open book. Bring any book you like. And because it won't help you, because आपसे जो वो पूछ रहे हैं वो केस स्टडीज हैं कि भाई ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या होगा. हम माइक्रो सिस्टम्स में पढ़ते हैं. आई मीन इन अ नटशेल इट्स लाइक आपके फोन में जो चिप है उसमें नैनोमीटर थिक लेयर्स हैं, उनको किस तरह से एक प्रोसेसर बनता है, लेट्स जस्ट से. तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं ये वो. अब उसमें आप ट्रबल शूटिंग किस तरह से करेंगे, उनको आप उनमें आप नई फंक्शनैलिटीज किस तरह लाएंगे कि उनमें मेमोरी बढ़ानी है लेकिन उसी एरिया में करना है. तो यू हैव टू रियली थिंक आउटसाइड द बॉक्स इवन एज अ स्टूडेंट. एंड दीज aren't like that I mean in class you don't really do research level questions, but they do gear you towards that mindset कि आपने जी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है. एंड आपने जो है वो नॉलेज एक तो गैदर करनी है. एक तो आपके पास बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है. I don't know what the state of the universities in Pakistan is right now, but in engineering universities you need to have subscriptions to international journal publishers. तो आपके हो गया Elsevier हो गया, MDPI हो गया, Sage हो गया. These are engineering like इनके बहुत सारे journals हैं और इनकी university level पे वो आपकी subscription होती है. तो आपके पास university का account है तो आप इनके सारे papers जाके download कर सकते हो and पढ़ सकते हो, बिकॉज आपने हर पेपर के 50 यूरो नहीं देने हैं फिर. तो उससे आप यू लर्न व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट, बिकॉज दिस इजंट द नेक्स्ट आईफोन. This is what is going to become iPhone 25 if you're in that field. So we're looking at things that will start becoming products 10 to 20 years from now. And how do you get that knowledge? How do you get into that mindset? You can only get there by reading a lot, learning how to take a paper apart. I firmly believe that every university, engineering university especially, but other other creative study fields of study as well, you should have journal clubs. You should have classes where not only आपको papers को आप discuss करें, हर student की बारी आए, papers को present करे वो, and that student should criticize that paper constructively कि इन्होंने जी ये काम नहीं किया. उस लेवल पे कि आप किसी international publication को criticize करें, you have to have a certain mindset, and that mindset needs to be developed for us to like make innovators and not just reverse engineers. आपके पास बहुत लोग मिल जाएंगे आपका existing iPhone को खोल के और components change कर दें वो, लेकिन उनको अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता, उसमें अंदर उसको आगे कैसे बढ़ाना है वो नहीं पता. तो you need to have a certain kind of skill set to have that. अपने papers लिखना, every student at least at the master level should have enough knowledge to be able to publish a scientific paper in a top journal that is peer reviewed from the international community. I've heard a lot about, I'm not very up to date about what the state of research is in Pakistan, but I've heard a lot about journals of low quality that are published in, and uske through aapke jo hai thesis ho jati hain, PhDs ho jate hain logon ke. But if international community jo मतलब 20 लोग होंगे दुनिया में जो स्पेसिफिकली उस मटेरियल पे काम कर रहे हैं जिस पे मैं कर रहा हूँ, फर्ज करें मतलब मेरे केस में 50-60 लोग होंगे चलो, लेकिन उन लोगों ने मेरा पेपर पढ़ के, उन लोगों ने समझ के, उन लोगों ने उन एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करके और वेरीफाई करना होगा, तब कोई कंसेंसस बनेगा, तब जाके 10 साल बाद जी एक कोई प्रोडक्ट बन के निकल आए या कोई something that helps mankind. That's at the end of the day what we do. So that mindset is not gonna be achieved by just रट्टे लगा के पास करना. और आपका विजन भी कहाँ है आपको, वो मुझे तो इकरा में ये पता भी नहीं था कि जर्नल पेपर्स होते हैं, ये पता था, मैंने कोई पढ़ने के मेरे पास ना मीन्स थे ना कोई एक्सेसिबिलिटी थी. तो आई लर्न साइंटिफिक राइटिंग ओवर हियर. And so correct me, tell me if I'm wrong on this, because again you were in undergrad at Iqra. मैं जब बेंटली में था तो इवन इकॉन की क्लास हो गई या फाइनेंस की हो गई, तो सिलेबस के अंदर अगर एक किताब से चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं फॉर लेट्स से इंट्रोडक्शन टू मॉनेटरी पॉलिसी,
तो 4 जो पेपर्स होंगे उसकी रीडिंग लिस्ट के अंदर, वो पीयर रिव्यूड इकॉन जर्नल के पेपर्स होंगे, जिसमें से फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर दिस, बेन बर्नांकी का पीएचडी थीसिस था ऑन द ड्राइवर्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में चल रहा था, तो हम वो पेपर पढ़ रहे थे टू अंडरस्टैंड बेन बर्नांकी की अपनी माइंडसेट और उसकी रिसर्च क्या, उसकी डिसीजन मेकिंग किस तरह इन्फ्लुएंस होगी, बिकॉज देन ही वाज इन चार्ज. Was Yeah. that the case in ICRA at that time, or was it just like book and no journal, peer-reviewed journal papers as part of your syllabus? It was mostly textbooks. It was mostly recommended textbooks. So अच्छी books भी होती थी. And it was जी ये आपके objectives हैं, जी ये चीजें important होंगी एग्जाम में, right? That sort of thing becomes like automatically आपने पूरी क्लास को उठा के बोल दिया जी आपका objective अच्छा इंजीनियर बनना नहीं है, आपका objective है आप मेरी क्लास पास करते हैं, right? I had a teacher in my third year who back then was doing his PhD at Georgia Tech, and he was a Pakistani. He is a Pakistani, and he had This to is come at back ICRA. because of this is at Iqra. Yeah, Okay. he had to come back for some visa reasons or something, and he taught one class in one semester at Iqra, and I was lucky enough to be in that. And he taught us about ये जो आपके LED lights होती है ना, जो आपकी तो पीछे colored लगी हुई lights है वगैरह तुम्हारे. पीछे लगी हुई भी हैं एग्जैक्टली एक एलईडी लाइट को आप क्लीन रूम में बनाते हैं लाइक यू नो बहुत छोटे छोटे लेयर्स को आप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं मेटल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एटसेट्रा एंड देन व्हेन यू पास अ करंट थ्रू इट इट ग्लोज अब उसमें हो क्या रहा है उसमें उनके यू नो एनर्जी लेवल्स के साथ क्या हो रहा है उन मटेरियल्स के जो बैंड्स होते हैं वैलेंस बैंड ये वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं उन एटम्स के ना उस लेवल पे जाके मैं पढ़ाया है एंड आई एम स्टिल इन टच विद हिम एंड ही लेफ्ट द एकेडेमिया नाउ and he's still working in that field but वो उसने मुझे ऐसा एक्सपोजर दिया था उस वक्त कि आई वाज जस्ट लाइक यार मुझे रोशनी पढ़नी है उस वक्त मेरा ये होता था बड़ा जी रोशनी पढ़नी है मुझे लाइट की स्टडी करनी है एंड एक ये इंस्पिरेशन मिलता है आपको जस्ट बाय हाउ यू आर टॉट समथिंग नॉट व्हाट यू आर टॉट सो मोस्टली एट इकरा इट वाज अबाउट passing the exam. जी आपका midterm exam is 30% of your grade, 20% is that one assignment that you have to give, and 50% जी आपका final उस पे है. यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज करूंगा एक बात, यहाँ पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने पढ़े हैं, वो ऐसे होते हैं कि जी आप पूरा सेमेस्टर कुछ भी कर लें आपके पूरा ग्रेड 100% एक ही एग्जाम पे आता है. ऐसे भी हैं कोर्सेज, तो इट्स नॉट कम्प्लीटली जी सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, but every professor, every group has that So, freedom. help break it down for the audience. Why is it not good to have a course जिसका आखिरी एक पेपर पे या एक एग्जाम पे पूरा का पूरा ग्रेड है? As your teacher as well, and we'll get to it, what you're researching, etc. in a moment. But why is that? You know, again, because that's the culture we grew up in. Midterm होता है, Yeah, एग्जाम होता है, ग्रेड आ गया, अब अच्छा ग्रेड नहीं आया तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर से yeah. अल्लाह आपका अगले एडमिशन साल नहीं फिर दे होना, देंगे. अगले Yeah. साल फिर दे देंगे. तो व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर एज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एज अ टीचर नाउ? यार इट्स टू मच ऑन वन डे. सही है. आपने एक स्टूडेंट भी इंसान है. अब मैं इस तरह से देखता हूँ कि जी पूरा सेमेस्टर जान लगा दी लेकिन आखिरी दिन 3 घंटे में कोई टेंशन थी सही से सोया नहीं बंदा, आपने उसका पूरा ग्रेड उस पर तबाह बर्बाद कर दिया. आपने नहीं किया, उसने खुद ही कर दिया. तो इट्स काइंड ऑफ अनफेयर एंड प्लस दैट इज जस्ट लाइक ये पेपर पास करो, दैट्स द ऑब्जेक्टिव. इंस्टेड ऑफ आपने क्रिएटिव लेवल पे आप हमारे यहाँ पे जो क्लासेस जब छोटी होती हैं बिलो अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी प्रेफर डूइंग ओरल एग्जाम्स एंड ईच ओरल एग्जाम इज अ 30-minute कॉन्वर्सेशन. तो उसमें आप जी प्रॉफ के सामने बैठे हुए हैं या पोस्ट के सामने बैठे हुए हैं जो भी आप है and they just go through the content that we discussed during the past 6 months. और उसमें फिर आप जो है ना देख लेते हैं as an examiner you see कि यार there's some topics that this person is struggling with or something. तो वो आप एक इंसान को एक बिल्कुल एक पर्चे के ऊपर जज नहीं कर रहे हो आप. अच्छा, ये उसकी बड़ी कैपेबिलिटीज इंटरेस्टिंग को बात दूसरी है तरह से ओरल कर सकते एग्जाम वाली, बिकॉज दिस हैं. 2-3 दिन पहले मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी जो वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान में. तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं यार बड़ा मसला हो गया है रिसर्च और यूनिवर्सिटी के अंदर. बच्चे जो हैं वो चैट GPT-4 लगा के जो है वो पेपर लिख रहे हैं, और एआई ने क्या किया है क्या नहीं किया हमें क्या पता, अब उसका बड़ा मसला हो रहा है, चीटिंग ये वो. तो मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा लुक द वे एटलीस्ट आई सी टेक्नोलॉजी इज कि इसको आप रोक नहीं सकते, ये और तेजी से अगले 2 साल के अंदर दुनिया बदल जाएगी.
बट आपने अपना एग्जामिनेशन मेथड चेंज करना है. इट्स लाइक व्हाट डू यू मीन? आई एम लाइक वेल, अगर आपने बच्चे ने सही तरह पढ़ा है तो आप उसके साथ एज अ प्रोफेसर 15-20 मिनट का सेशन रखें सेमेस्टर में 3-4 दफ़ा, एंड यू हैव अ कॉन्वर्जेशन एग्जैक्टली एज हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग इट, कि भाई ये थियरी पढ़ाई है तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इस पे कॉन्वर्जेशन करते हैं. अब अगर उसने ChatGPT 4 लगाया हो ना लगाया हो पेपर में फ़र्क नहीं पड़ता. इफ दे कांट होल्ड अ कॉन्वर्जेशन विथ यू बिकॉज यू आर द प्रॉफ, then you know they haven't studied and that's their grade. And that's the way Exactly. around the AI problem. And they were like, oh, but uspe time. I'm like, but you have to change. You can't say no to AI just because you don't like it as a technology. You have to change your methodology of assessing a human Exactly. being. And also, Yeah. by the way, that's good for interpersonal skills because that's what the world is boiling down to ultimately. Exactly. आपने connection भी बनाया है. The student gets into touch with, in a different way, one-on-one conversation से. Plus, this problem we're dealing with it as well. मैं courses पढ़ाता हूँ उसमें जी एक course हो गया lightweight design. तो उसमें एक chapter aluminium के ऊपर होगा, एक titanium के ऊपर होगा, एक composite materials के ऊपर होगा. हम उनकी properties discuss करते हैं, हम देखते हैं उनकी क्या uses हैं, उनको किस तरह से design कर सकते हैं to enable lightweight, structures that are light in weight and also very strong, let's say. तो इसमें तो एक ही होगी, लेकिन there's a bunch of core courses that are like programming. तो आपने पाइथन का अगर कोर्स पढ़ाया है तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स वो खुद से करेंगे उसका फाइनल जो रिपोर्ट है, तो you're just kidding yourself, and this is The an world has active moved to discussion. zero code already, no code. Exactly. AI is going to write the code for you now. अब मैं स्टूडेंट्स भी नहीं रखता हूँ कोडिंग करने के लिए There एक्चुअली. you go. There you. So you've lived through the experience, right? So, या अच्छा, आगे बढ़ते हैं in terms of, so that's your journey and now you're teaching. You're या teaching, you're doing research. पहले तो बताएं कि कर क्या रहे हैं आम लोगों को, कि भाई ये material sciences होता क्या है, additive manufacturing क्या है. एक जरा या 101 दे दें so that we all know कि ये है क्या, and then we'll get to what is the research right now and what does it mean for the future. But first, just level set with us about what you do and why is it important. Yeah. So what I research or have been researching through my PhD and afterwards is additive manufacturing, like you mentioned, which is also known as 3D printing. And these are a bunch of different technologies under one umbrella. This is an umbrella term. जिससे आप एक चीज को एक शेप दे रहे हैं, कोई एक पार्ट बना रहे हैं, कोई एक आप कॉक बना रहे हैं किसी मशीन का, या पूरी मशीन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, या कोई दरवाजा बना रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट मटेरियल्स, मगर आप उसको एडिटिवली बना रहे हैं. तो फर्क ये है उसमें कि आपने, लाइक अ कारपेंटर मेक्स अ टेबल, यूजुअली वो उसके ऊपर द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट लॉग that comes in, and then it's turned into planks and turned into a table or a chair or whatever. Additive में में ये होता है सॉडस्ट कि बनेगी, सॉडस्ट जाया होगी, कुछ और कटेगा, that's खराब कट true, गया तो that's जाया one हो thing. जाएगा. Exactly. There are advantages to subtractive manufacturing, obviously. Additive is coming through from the late 70s, early 80s. And additive में होता है ये कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लेयर बाय लेयर बना रहे हैं, ये फर्क है. अब आपकी एक टेक्नोलॉजी है जिसको आप एडिटिव कह सकते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग. वो प्लास्टिक की चेयर्स नहीं होती जो हम बीच पे यूज करते हैं वगैरह, दोज कैन बी मेड विद इन 1 or 2 seconds, बिकॉज एक मोल्ड होता है, उसके अंदर वो इंजेक्ट होता है मोल्टन प्लास्टिक, और वो इंजेक्ट हो जाता है 1 सेकंड बाद ठंडा होके, और वो पूरी एक आपकी चेयर आ जाती है. दैट्स वेरी हाई थॉरोपुट, राइट. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे नहीं हो सकता. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में एक एक चीज आप जो है वो लेयर बाय लेयर बना रहे हैं, तो आपको एक चेयर बनाने में आपको 1 दिन लगेगा. तो इट्स नॉट एप्लीकेबल टू दैट. व्हाट इट इज एप्लीकेबल टू आर प्लेसेस जहां पे आपके वॉल्यूम्स कम हो, आपके जो पार्ट्स हैं वो लाखों नहीं बन रहे हैं, हजारों बन रहे हैं, और उनकी ज्योमेट्रीज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. तो उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जनरल इलेक्ट्रिक का एक लीप इंजन है जो एयरबस A350 में यूज होता है. उसका फ्यूल इंजेक्टर A350 में भी हुआ है, एक दो और में भी. लीप इंजन जहां जहां यूज हुआ है, उसका फ्यूल इंजेक्टर जो है उस इट हैज टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर कि इतना फ्यूल इतने टाइम पे इंजेक्ट करे वो, और वो फ्यूल कुछ चैनल्स में से जाए, वो इतना सा पार्ट है कोई. उसकी ज्योमेट्री अंदर की इतनी कॉम्प्लेक्स है जो कि उन्होंने कैड मॉडलिंग की कंप्यूटर पे, अब वो बन नहीं सकती है नॉर्मली. तो उन्होंने उसको मेटल से, टाइटेनियम से उन्होंने उसको एडिटिवली मैन्युफैक्चर किया. और प्लेन्स की ऑब्वियसली लाखों प्लेन्स नहीं बनते हैं, तो दैट फाइंड्स अ वेरी नाइस एप्लीकेशन इन दैट सेक्टर.
तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आप लो वॉल्यूम्स में लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बनाते हैं. यू कैन मेक देम आउट ऑफ प्लास्टिक्स, यू कैन मेक देम आउट ऑफ ceramics, you can make them out of metals or semiconductors, or composite materials. And composite materials is where or composite materials, depending on where you come from in the world, is what I look at. So उनसे आप जी ऐसे फंक्शनल पार्ट्स बना रहे हैं जिसकी एक जॉब है जी फ्यूल इंजेक्ट करना है, या फिर आप स्ट्रक्चरल पार्ट्स बना रहे हैं जो कि जी फोर्सेस, अगर प्लेन की एग्जांपल ले रहे हैं तो प्लेन का जो फ्यूजलाज होता है वो उसके टेम्परेचर जा रहे होते हैं जी -55 डिग्री सेल्सियस जब आप ऊपर हैं 35,000 40,000 फीट, और जब आप लैंड कर रहे हैं तो एयर फ्रिक्शन वगैरह की वजह से 120 डिग्रीज. अंदर तो हमें फील नहीं होता, हम प्लेन में बैठे होते हैं, लेकिन द स्किन ऑफ द प्लेन इज गोइंग थ्रू हाई टेम्परेचर साइकिल्स एवरी टाइम इट फ्लाइज. हम उनको ये देखते हैं कि जी ये सर्वाइव कैसे करेंगे अब 20,000 30,000 फ्लाइट्स, एंड फ्लाइंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, सेफेस्ट वेज टू ट्रैवल. इट इज now because of these innovations. तो उन materials पे structural materials हो गए, functional materials हो गए, उनमें हम काम करते हैं जी. एक material जिसकी heat absorption बड़ी अच्छी है उसको mix कर लो ऐसे material की जो बहुत strong है, तो ये हो गया composite. दो materials को साथ में mix कर लिया आपने. So that's where I work at, and my focus is more on the automotive and in the aviation sector currently. Yeah. अच्छा, तो इस पे अगेन in terms of composite materials and 3D printing and things like that, well, I remember reading, पता नहीं पाकिस्तान में तो पता नहीं कितने NOCs चाहिए 3D printer लाने के लिए, but what's the state of technology in the lab, in the research field, when it comes to composite materials, and give us a view of like दुनिया जा है कहाँ इस वक्त और कहाँ जा रही है, and again we'll get to climate change and things like that and its relevance to this part, but just generally like what's going on in this space and why is this so exciting, because I know it is very exciting from talking to you, but educate the audience. So like I said, composite materials are जो बहुत ही दो distinct different materials को आप mix कर लें और एक नई set of properties आपके सामने आ जाती हैं. सही है. अब आपके पास इतने सारे इसमें if I interrupt you, एक recent कोई ऐसी consumer product है जो लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये बड़ा innovation daily basis पे हम देखते हैं, anything that can relate to people? I would say planes. Essentially, I mean, हमारे डेली लाइफ में हम इतना डील नहीं करते हैं इस चीज को, मैंने भी नहीं किया था, बट व्हेन आई गॉट इनटू दिस, आपके जो प्लेन्स जो पुराने होते थे उनकी लुक भी डिफरेंट होती है, एल्यूमिनियम के बने होते थे और अब कंपोजिट मटेरियल्स के बने होते हैं. आपके डेली लाइफ में दीज मटेरियल्स आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. अब कंपोजिट मटेरियल्स की अगर मैं कोई चेयर बना देता हूँ तो वो जी 2-3 जनरेशन तक चल जाएगी, but it'll be expensive to make. और आपके कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का अगर बात करते हैं तो कार्स में जो आपकी Formula 1 में बहुत यूज होते हैं, because they're as strong as steel but they weigh 1/8 of the weight of steel. So anywhere you want something that has to be very lightweight, जो ट्रांसपोर्टेशन हो गई आपकी या आपका स्पेस में हो गया, स्पेस में आप 1 किलो ऑफ मटेरियल यू वांट टू सेंड टू स्पेस कॉस्ट €30,000 राइट नाउ. तो आपने वेट सेविंग्स जहां जहां कर सकते हैं वहां करते हैं, तो उन जगहों पे अभी ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. So let's go back to the state of the industry right now. Yeah, so the state of the industry is related to that. We're dealing with we're in a phase right now jahan pe I'll have to bring climate change into this, because we're running out of materials. Essentially we're running out of lithium. आपकी लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं वो आपकी दुनिया को पावर करेंगी अगर आपकी सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिकल हो जाती हैं तो, लेकिन लिथियम के मसले आने वाले हैं, हीलियम के मसले आने वाले हैं. सो व्हाट डू यू डू इन सच अ प्लेस व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग दैट इज गोइंग टू बिकम अ प्रोडक्ट 30 years from now? तो आप लिथियम आयन बैटरी के बारे में अब नहीं सोचो, आप सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में सोच लो, आप कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में सोच लो जो कि उन मटेरियल्स को यूज नहीं करेंगे जो कि स्कैर्सिटी की तरफ जा रहे हैं. And again, your timeline just for the audience is 20, 30, 40 years down the road, right? क्योंकि अभी जो लिथियम के बैटरी प्लांट्स लग रहे हैं वो तो 15 साल की उनकी लाइफ टाइम है और माइनिंग हो रही है और वो सब, बट इन द रिसर्च अरीना you're looking at 2060 and beyond. हम आगे की तरफ का ही सोच रहे होते हैं. जो टेस्ला ने लगा दी फैक्ट्रीज वो, these will help out a lot, and जब तक लिथियम वगैरह है तो बहुत अच्छा है, लेकिन we're dealing with crisis coming down the road. So हम लोग के जो इनोवेशन का पोटेंशियल है वो आपने अब आगे ही देखना है, बिकॉज आप जितनी बैटरियां बना लें, आपका अगर पावर प्लांट
कोल पे चल रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसका प्लैनेट को। सबसे बड़ा थ्रेट है ही है, सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो we're basically not going to be able to have a habitable planet eventually, whatever habitable planet ज्यादा हो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना आना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए छोटा सा जो मेरा पार्ट है इस रिसर्च में, क्लाइमेट चेंज इज अ बिग बिग थिंग, वो ये है कि जी आप मटेरियल्स को, अब आप सेलफोन ले लें एक एग्जांपल। आपने सेलफोन यूज किया, 2-2.5 साल यूज करते हैं, फिर आपका नया आ गया आईफोन, तो आपने वो ले लिया, आपने पैसे जमा करके वो ले लिया। उसके अंदर जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और इतने स्कैरसिटी की तरफ जा रहे हैं, कोबाल्ट इज वन, दैट ये ई वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, ये इट्स प्रैक्टिकली नॉन रिकवरेबल, बिकॉज नोबडी विल कैन हैव अ बिजनेस प्लान कि वो जी इतने माइक्रोग्राम्स या नैनोग्राम्स ऑफ दिस वेरी प्रेशियस मटेरियल शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कंपैरेटिवली अ हीप, that heap is only a millimeter thick but this material is only nanometers thick. तो आप you're slowly but surely going towards that. तो हम लोग material circularity पे काम कर रहे हैं। मटेरियल्स की सर्कुलरिटी क्या है, एक आप जी डिजाइन समथिंग फॉर नॉट फॉर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग भी अब पुरानी होगी। एक तो आपने ऐसा डिजाइन कर लिया कोई प्रोडक्ट जो रिसाइकल हो सकता है, जी प्लास्टिक का है तो जी वो पूरा क्रश हो जाएगा, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट रिसाइकलेबल मटेरियल इन द वर्ल्ड। आप एल्यूमिनियम की चीजें बनाते हैं तो यू कैन जस्ट क्रश देम, एवरीथिंग कैन बी मेड इनटू अ कोका कोला का कैन अगेन, and it's very good. But the complex systems we have, microsystems, जितने computer chips हो गए, जो जितने भी chip level चीजें हैं, उनमें recovery बहुत मुश्किल है. So you have to design for reuse. तो उसमें आप एक चीज सोचते हैं, modularity. Maybe you've heard of Framework, an American company that makes modular. You told me about it in the summer. Exactly. फ्रेमवर्क बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एक यूरोपियन कंपनी है which makes cell phones called Fairphone नाम है उसका, एंड दे मेक मॉड्यूलर फोन्स। जी पुराने फोन होते थे ना हमारे, के प्लास्टिक की बैग हटा दी और बैटरी निकल गई, सिर्फ बैटरी नहीं निकल रही, उसका कैमरा भी निकल रहा है, उसका मदरबोर्ड भी आप एक्सचेंज कर लो। Like, so I remember we had this conversation. It's kind of like हमारे पुराने PCs, right? ग्राफिक्स कार्ड पुराना हो गया, वो केस खोला, उसमें से निकाला, कुछ मेमोरी खराब हो गई, वो चिप निकाली और नई वाली डाल दी। अगर मदरबोर्ड में कैपेसिटी नहीं है because the tech had moved and that's what I was going to, okay then you're done. बट जब तक वो चल रहा है मदरबोर्ड, उसके अंदर आप अपग्रेड इंस्टॉल करते जा सकते हैं। So this is where 3 abstractions come in. The computer is your system. That's the system level thing. The computer is made up of components, graphic card, processor, etc. Processors जो component है, it is made up of materials. मैं oversimplify कर रहा हूँ, बीच में थोड़े और stages आते हैं, मगर in the end processor किस चीज का बना हुआ है? सिलिकॉन वेफर के ऊपर मेटल्स ग्रो किए हैं उन्होंने, ग्रो करना बोलते हैं, जो नैनोमीटर लगाते हैं ये लेयर्स वगैरह। तो ट्रांजिस्टर्स बने हुए हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन 1 स्क्वायर मिलीमीटर, राइट। वो जो हम सुनते हैं 3 नैनोमीटर प्रोसेस आ गया, 5 नैनोमीटर प्रोसेस, लड़ाई पूरी इस बात पे ही चल रही है कि ये ASML की टेक्नोलॉजी चाइनीज के पास कैसे आ गई और उन्होंने नई चिप बना ली है कोई। एग्जैक्टली हाँ, और ये अब क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग इतनी आगे, तो क्वालकॉम इज वन ऑफ दोस, एनवीडिया मेक्स दीज थिंग्स। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जी आप ये सब बना तो रहे हैं, अभी बड़ा बूम भी आ रहा है, सब कुछ, सब आपके पूरा AI वगैरह जितना सॉफ्टवेयर लेवल एब्स्ट्रैक्शन है सब इस पे बेस्ड है, लेकिन यार आपने सिस्टम में से कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर दिया, आप उसको मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स के साथ क्या हो रहा है, स्पेशली दीज वेरी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, हाउ डू वी गो अबाउट designing these components for reuse, right? So उसमें अब आपका प्रोसेसर जो इतना छोटा हुआ है, इतना एनर्जी एफिशिएंट हुआ है, सब हुआ है, वो सब दरम बरम हो जाएगा, प्रोसेसर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर से वो जो पुराने हम कंप्यूटर्स देखते थे Mark 1 वगैरह, उस साइज के कंप्यूटर्स, वो दैट्स नॉट आल्सो राइट। सो वी हैव टू फाइंड अ मिडल वे आउट। सेमीकंडक्टर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट एप्लीकेशन इन दिस, राइट। देयर आर अदर फील्ड्स जहां पे आप सोचते हैं जी प्लेन रिटायर हो गया या गाड़ी आपकी रिटायर हो गई, तो आप ना सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी उसके सारे जो मटेरियल्स जिसके बने हुए, आप नेचुरल फाइबर्स के कंपोजिट्स बनाएं, आप जूट के, हेम्प के फाइबर्स से आप कंपोजिट मटेरियल्स बनाएं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो जाएं, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जी आप एक बिजनेस मॉडल ऐसा तैयार करें, आपकी कंपनी, आप गाड़ियां बना रहे हैं, तो आप गाड़ियां सिर्फ लीज करते हैं, या आप कोई इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड बना रहे हैं जो कि पावर प्लांट से आप पहुंचा रहे हैं शहर में इलेक्ट्रिसिटी, तो जो 200 बीच में ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, जितने स्टेशन आ रहे हैं, स्विचेस आ रहे हैं, उनको आप इस तरह से डिजाइन करें कि आप गवर्नमेंट को वो लीज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है या उसकी जो सर्विस लाइफ है, सॉरी,
15 साल के बाद वो वापस आपके पास ही आएंगे, because you will do what is the best for that component at that component level. आप उसको ना सिर्फ सेल्स एंड सर्विस दे रहे हैं, बल्कि आप उसको रिकवर भी कर रहे हैं. रिकवर करके आप अपने नेक्स्ट जनरेशन में यू do a thorough check on it and you don't lose any material. It becomes way more expensive. These business models are very difficult to manage. I'm involved in a couple of projects in energy distribution like this. And they're very, you know, companies really would want to have to do with it. Like उनको बहुत जरूरी नजर आना चाहिए कि बहुत जरूरी है, तब हो सकता है ये. तो दिस गोज फ्रॉम टेक्नोलॉजी इनटू बिजनेस इन दैट किसी लेवल. हमारे दोस्त, हमारा एक दोस्त है उस टाइप के बंदे ने एक्सेल स्प्रेडशीट पे जो है वो नफा दिखाना चाहिए 20 साल बाद के ये वापस आएगा तो माल थोड़ा बनेगा, वरना प्रोजेक्ट आगे नहीं जाना. एग्जैक्टली नहीं, उसमें आप स्ट्रैटेजीज होती हैं, आप उनको डिजाइन ऐसा करें अपने कंपोनेंट्स को कि वो आगे वाली चीजों में रीयूज हो सके. सो वी से लैंडफिल इज द वर्स्ट, राइट? एक प्रोडक्ट को लैंडफिल में डाल दिया. अब कहते हैं रिसाइकिल करना बड़ा अच्छा होता है. वी ग्रू अप लिसनिंग टू दैट, राइट, व्हेन वी एक्सपीरियंस इट. कचरा वचरा भी आप सेपरेट कर रहे हैं. अब हो रहा है कि जी अगले 20 साल में कि recycling is the last resort. आपने reuse करना है. You have to design products to be reused. And the integration of technology has brought us a lot of wonders, cell phone being one. I still consider airplanes, cell phones, these are wonderful things if you look at them from an engineering perspective. But the havoc it has wreaked on the planet, वो काफी खतरनाक हो चुका है. और planet को छोड़ें, अब आपके materials जब scarce हो जाएंगे तो आपकी ये चीजें unaffordable हो जाएंगी और फिर unviable हो जाएंगी बनाना. तो this is all again ये 50 साल बाद की सोच है. अभी तो सब कुछ बूम चल रहा है. अभी मैंने खुद 1-2 दिन पहले देखा, नासा ने एक सॉलिड स्टेट बैटरी बनाई है. अब हर बैटरी के अंदर जो हम लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक लिक्विड होता है. दैट लिक्विड is the weakest link, not only in terms of the capacity कह लें या the performance of the battery, but also because it's a fire risk, right? NASA, and not just NASA, but a lot of other battery, जो मेरा direct relation नहीं है battery research में, लेकिन solid state batteries जिनमें कोई वो नहीं हो, electrolyte is also a solid, उस पर बड़ा काम हो रहा है, because that makes the dream of having electrical planes a possibility. Which to me is a wonderful thing, because aviation, मैं जब आपने अभी mention नहीं किया, लेकिन जब भी मैं बात कहता हूँ कि I work in sustainability and aviation, तो लोग मुझे यूं करके देखते हैं कि जी sustainability aviation क्या होता है. Exactly. तो number one, मैं उनके materials की sustainability देख रहा हूँ, मैं उनकी fuel और emissions की नहीं देख रहा हूँ, लेकिन उस पर भी काम होता है. लेकिन if you have electrical planes, then the only bottleneck is जी आप fusion energy बना लें जो कि clean आपकी energy बन रही है, फिर आप बैटरियां दबा के चार्ज करें, फिर जी प्लेन उतरेगा, बैटरियां चेंज होंगी उसकी, उड़ जाएगा. एंड नो नॉइज आइदर एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो व्हाट वी सी इन इलेक्ट्रिकल कार्स. या So in terms of what's happening in the lab, if you can you know look, knowing what you know about where research at the very early stages, and of course failures hote hain, setbacks hote hain, there's an S curve involved and all of that stuff, but smart people are at it. Based on what you're seeing right now, give us a picture of the future, 2050, 2060, holding everything constant ke ji world war na ho jaye ye wo to obviously shocks hain, but where the state of play in research is, where do you see the world going, number one? And number two, again, if you were to then take off your German hat and put on a Pakistan hat, what should people in Pakistan be thinking about trying to do to prepare for that future? Because again, I'll tell you my own take on this. We've talked about this. To me, it's a leapfrog opportunity, because the transformation is going to be so significant based on very little that I know from my own reading and understanding of what's going on. कि अगर आपके पास legacy infrastructure है भी नहीं, which is the case mostly in Pakistan, they're not advanced, it's not an advanced economy, but the scale of transformation is so significant that if you adopt the significant transformation in the right way, you can leapfrog ahead, because you're not handicapped by that legacy infrastructure problem. In that sense, that's my view. If you disagree, I would love your thoughts on this as well, and we can talk about it. But help the audience understand a developing country में पहले तो research किस तरह future क्या है, और फिर developing countries में किस तरह fit आ सकती है. Yeah, so in a nutshell, research जो है ना, जो innovation का period है ना, अब एक बड़ी innovation से next बड़ी innovation का वो छोटे से छोटा हो रहा है, and the next 10 years we're looking at AI assisted developments, and because of that जितने आपके
engineering problems जो अच्छा होते हैं एक ना सेकंड, जिनमें प्रॉब्लम की तरफ जाने, आपने एआई हम्म, असिस्टेड का, a lot of हम्म। media talk, a lot of popular talk about AI, but not many people fully understand कि ये क्यों important है। तो 2 मिनट में 101 भी देते हैं कि ये why is that important I mean, given I what only you do? know how it affects my work, so Correct, I can yeah. give you that perspective. यार engineering problems जो होते हैं ना, जो complex होते हैं, they're usually complex in two ways. They're complex because उनका solution ढूंढना मुश्किल होता है, और दूसरा होता है कि उसके लिए tedious होता है, बहुत टाइम लगता है करने में। सही है। अब मैं अगर कोई मटेरियल को टेस्ट करना है, मैंने जी नया मटेरियल बनाया जो कि कैंडिडेट है एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एयरप्लेन फ्यूजलाज मटेरियल का, तो मुझे उनमें कुछ साल लगाने होंगे उसको टेस्ट करने में, टू गेट द स्टेटिस्टिक्स इन व्हिच मेक्स इट लाइक, फिर मैं जाके जी बोइंग के पास चले जाऊं, एयरबस के पास चले जाऊं, बोलूं ये मटेरियल है मेरा। एआई उसमें इस तरह काम करता है कि एआई गिव्स यू अ डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन. It does not do the tests for you, that those tests will take time, but it gives you a very good approximation to what would happen, which you cannot do without a software brain working for you. That's the best way I can explain it. मेरे टेस्ट होते हैं कुछ जो जी 4-4 5-5 हफ्ते तक एक मटेरियल की हम खींचातानी चल रही है, एक मटेरियल को पकड़ लिया, एक यूं करके एक स्लैब है, राइट, उसको ऐसे पकड़ लिया मशीन ने, और वो उसको खींच रही है डिफाइंड फोर्स के साथ ऊपर नीचे, which is simulating what happens to that material when that plane is going up and seeing high and low temperatures. तो वो इतने साइकिल्स तक चलाएगा। मेरा एआई मुझे क्या करके दे रहा है, उसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके मुझे उसके एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा है, जिसके ऊपर मैं अपनी एक्सपेरिमेंट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को फिल्टर डाउन कर सकता हूँ. देन आई डोंट नीड टू हैव 15 parameters that I test one by one. I can only do that in 5 and get a result that is 90% as good. And then you run the physical test after that accelerant has played this role. No, I don't need to run 15 tests. I can run 5 tests. Yeah. Okay. So, and then get a result that's 90% as good. फिर मैं 90% के साथ जब मैं आगे जाके अगर पिच कर रहा हूँ उसको, तो फिर उसके बाद डिसीजन आता है, तो फिर मैं लास्ट 10% करूँ या ना करूँ. That is a huge difference. Sounds like 90%, वो जो 10% लास्ट है वो बड़ा फर्क पड़ता है. तो इनोवेशन को आपको मेरे केस में असिस्ट कर रहा है. अब जो सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं लोग, जैसे बिग डेटा स्टफ, which I'm not like directly involved in. मेरा डेटा होता है अपना, लेकिन वो that's not like big data, right? उनके लिए तो और भी ज्यादा accelerate करेगा. तो what I see is this assistance that we're getting in research through AI, through neural networks, is just going to innovation का period को जो है वो shrink करता जा रहा है. और And उस again, innovation के period को, would it also then be fair also that it's a self-reinforcing cycle, in the sense that, this is my understanding of it, that as the electronics become more and more common around us in terms of sensors and data collection, all of that, that data then will feed into the neural networks to make the simulations that much more effective, which therefore will accelerate, which therefore will put things out in the world faster, and it continues to feed on itself. Exactly. As we get Yeah, more sensors out. it is a self-sustaining loop, because इतना सारा डेटा आप मतलब 1 लाख लोग बिठा के आप उनको प्रोसेस कराएं, या आपने एक सुपर कंप्यूटर लगा दिया जिसके अंदर एआई काम कर रही है, आपने बस उसको प्रोसेसिंग पावर, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बस. फिर एक दफा जब वो स्ट्रक्चर बन गया आपका, वो खा रहा है डेटा और निकाल रहा है रिजल्ट्स, एंड दोस रिजल्ट्स आर एवरी डे देयर मोर एंड मोर एक्यूरेट. और वो उसके आपके अच्छे यूजेस भी हैं, आप वेदर प्रेडिक्शंस बेहतर दे रहे हैं, इस तरह की चीजें. बुरे यूजेस भी हैं. आई मीन आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, यू वुड नो बेटर, बट चाइना में सुना है कि जी फेशियल रिकग्निशन इतनी अच्छी हो गई कि दे डू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन दैट. There's gait recognition now too. If you hide your face and they have enough data of you walking around, they can detect your gait through gait, meaning the way you walk. Yeah. And you're hiding your face, but the machine knows that it's you because you walk a certain way, and it knows how to detect you. Exactly. और आपके हम लोग अगर अपने एक पीपल आवर एज एंड यंगर, आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता था, हम स्मार्टफोन्स हमने भी यूज किए, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स वर नॉट दैट गुड, दे वुड टेक टाइम. And now they're getting not only faster, but they're getting more and more accurate. Face recognition के आगे फोटो रख देते थे, वो डिटेक्ट हो जाती थी. क्या चल रहा है पीछे? पीछे एक एल्गोरिदम ही चल रहा है. उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं बिकॉज वो डम है.
वो डम क्यों है? क्योंकि वो उसको हम इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट नहीं करते. एट द एंड ऑफ द डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ लेबल वी गिवन टू इट. इट्स सम थ्रेशोल्ड दैट वी डोंट इवन नो कि वो सेल्फ अवेयर कहते हैं, वो कब हो जाएगा. बट दैट्स लाइक इट्स अ स्पेक्ट्रम थिंग. वो क्रॉस हो भी जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, हो चुका भी है कहीं कहीं. तो the state of research is such that because of this, innovations will shrink in terms of time period. आपने उसको कहा leapfrog करने की opportunity है. मेरे उसमें उसका एक flip aspect भी है कि the difference between the innovators slash people using innovations and the people who don't is getting bigger and bigger. तो उसमें आपने बस ये देखना होता है कि I've had conversations with my students about this who get worried about AI. Bachelors कर रहा है मेरा एक student, thesis कर रहा है मेरे supervision में, आके कहता है मैं मतलब how do I not become obsolete, right? My example of that, and very crude example, is कि जी जब किसान ने पहली दफा ट्रैक्टर देखा था तो उसने भी यही सोचा था कि मेरी जॉब तो गई अब, लेकिन we have to learn to coexist around it. We have to find ways, and that leads me back to आपने अगर अपने साइंटिफिक मेथड को समझा सही से, अगर आप साइंसेज में, अगर आप इंजीनियरिंग में हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में हैं, आपने उनको सही से समझा है, you have that base, then you can innovate and go get around this problem. Otherwise you do go towards obsolescence because आपने हमारे people from our part of the world have been known to be the best programmers, right? सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वगैरह, बहुत हमने इनोवेशन भी की उसमें, बहुत पूरी दुनिया में, you know, India is one of the biggest software places in the world, but that is going to get less and less necessary. So what do those guys do, right? If you're close to retirement, you're not worried about it, but what do up and coming people do? They need to find ways to go around that. And how do you go around it? Only through having that mindset. If you don't have that mindset, agar aapka mindset yahi hai ki I want that quick buck, I wanna just specialize in one thing and that's it, तो नहीं हो सकता वो. You have to diversify. आपने दूसरी फील्ड चेंज करने की जरूरत है. फील्ड चेंज से मुराद ये नहीं है कि आप पुरानी फील्ड छोड़ दें, लेकिन आप अपने ऐड करें, स्किल सेट्स को मल्टीप्लाई करें. तो इन द एंड यू एंड अप समथिंग लाइक, यू नो, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छा है और जी वो आई डोंट नो दुनिया का बेस्ट शेफ भी है. You know, you have diversified people then. So that's one way to deal with it. But the problem of infrastructure is going to get, in my opinion, is not going to get any easier because आपने वो अगर leapfrog करना है तो आपने उतना invest करना है पहले. These companies, these like TSMC हो गई, आपके Qualcomm वगैरह, अभी जर्मनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है because of the whole animosity in the West. यहाँ पे बहुत प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के. तो वो उसके लिए जो आपका टर्नओवर तो बड़ा होता ही है, उसकी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इतनी बड़ी है इन बिलियंस, एंड देन 2 years लेटर आपका जी 5 नैनोमीटर से 4 नैनोमीटर हो गया प्रोसेस. तो आपने सब कुछ तो नहीं, चलो, लेकिन मोस्ट ऑफ योर स्टफ गोज आउट एंड न्यू स्टफ कम्स इन व्हिच इज इवन मोर एक्सपेंसिव. In the semiconductor industry, it's very difficult to keep up with that. You need to have that status, or you need to have that much money to be able to do that. सॉफ्टवेयर में हमने बहुत एक्सेल किया क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम और आप भी पायरेटेड पे ही पले बड़े हैं, पूरा विंडोज 95 से यूज कर रहे हैं, तो हमने वो सीख ली चीजें. मगर इफ यू थिंक अबाउट ट्रांसपोर्ट, राइट, इफ यू थिंक अबाउट बैटरी टेक के लिए आपको एक फैसिलिटीज चाहिए जो आप प्रोडक्शन करें, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन काफी नहीं है, आपने वो माइंड्स तैयार करने हैं बाहर से. मैं तो यहाँ आ गया ना, यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ. हमें अगर पाकिस्तान में करना है तो हमें वहीं का टैलेंट को वो नर्चर करना होगा, which leads me to one of my dilemmas कि यार मुझे भी करना चाहिए. And again, it's one of those things, right? It requires a long-term strategy in the sense कि पहली तो adoption ये होगी कि आप me too या copycat innovation produce करें. But अगर आप सिर्फ उसी पे ही अटक गए तो you will be obsolete sooner rather than later. लेकिन अगर आप उस Me Too, which is what China did, started off as हम मजाक उड़ाते, China copy है माल की. Now it's, you know, Huawei is cutting edge chip technology. Exactly. Because you build the ecosystem, you build the minds, you build the scientists, you build the ecosystem, you build the research labs, and you continue building 20, 30 years down the road, you have your own indigenous ecosystem that can research. So that's on the hardware side. But I also think about it on the sort of software
or governance of a countryside, right? Which is ke is waqt, if you are in India, you're getting better at it, but still a lot of leakages in the way the government does business. Pakistan is even worse. Bangladesh, Sub-Saharan Africa, Sri Lanka, all of these places, there is a lot of innovation coming down the pipe, again, through AI-assisted technologies, which can improve human outcomes, which again, if there's Maslow's pyramid of hierarchy of needs, you solve for those basic problems through more efficiency. Through these technologies, you kind of unlock the ability of the human brain as a society to look at that, right? And I think usme bhi, again, going back to the earlier conversation, like education is critical, right? Because you need critical thinking skills at the end of the day. I think that's the only path forward in this world. But the question I have on related to this now is, because you talked about the flip side, the gap between the haves and the have-nots will even continue to grow. What does that look like from your point of view? Like, what are the implications of, let's say, falling behind the innovation curve in this era of climate change and advances in material sciences and things like that to any country? Like, because it's a conversation, right? It's like, I think मैंने this weekend 60 minutes की conversation थी, the Five Eyes, which are the five sort of allied spy chiefs of England, New Zealand, Australia, UK, and Canada, US and Canada. तो वो कहते हैं कि इसके अंदर like अगर आप टेक सेक्टर में हैं, कटिंग एज टेक में आपका काम है, तो शायद आप जियोपॉलिटिक्स की फिक्र ना करें, लेकिन जियोपॉलिटिक्स आपकी फिक्र करेगा, because this is a battle now, it's on. So what does that look like from your mindset? Like, what are the costs of falling behind here? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यू कांट रियली रन अवे फ्रॉम दैट. आप जिस भी फील्ड सेक्टर में हैं, आप नहीं कर सकते. यू इट्स या टू मी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. हाउ डू यू, आपके जो कैलेमिटीज आ रही हैं ग्लोबल स्केल पे, जो नजर आ रहा है कि आई मीन वो भी स्टेटिस्टिक्स है ना सारा, मगर ओवरवेलमिंगली लग रहा है कि जी अच्छा सीन नहीं है आगे प्लानट का. तो आप अगर हैव नॉट्स में हैं ऑलरेडी, तो आप उसको डील करने के लिए आपने इमीडिएट एक्शन लेना है. तो अगर आप हैव नॉट्स में, तो आप कैसे ले सकते हैं उसको? और अगर लेना भी चाहें तो पॉलिसी, लोकल गवर्नेंस, लोकल व्हाटएवर्स, दैट ऑल स्टैंड्स इन द वे, एंड दैट लीड्स बैक, ट्रिकल्स बैक डाउन टू कि भाई पता ही जब नहीं है कि इम्प्लीकेशन क्या है, या जो सॉलिड साइंस को डिनाई करते हैं. आई एम लाइक सूडो साइंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, आई नो, बट जो सॉलिड साइंस है उसको बंदा जांच पड़ताल करके जब समझता है, तो देन यू हैव टू एक्ट ऑन इट. एंड फार बी इट फ्रॉम मी, मैं तो एक छोटे से टाउन में एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज में स्पेशलाइज करके और अपना काम चल रहा हूँ. आई एम डूइंग माई ड्रीम जॉब, राइट? दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू. तो आई एम दैट स्पेशलिस्ट जिसको परवाह इतनी ज्यादा नहीं होती है इन द डे टू डे के जियो पॉलिटिकल क्या सीन हो रहा है. बट यू हैव दैट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि यार ये अगर अब ऐसी पॉलिसी आएगी कि जी हम यहाँ पे जर्मनी में बहुत एटॉमिक पावर प्लांट्स के खिलाफ मूवमेंट्स भी बंद करना शुरू कर दिया है, वो विंड में हम बहुत आगे निकल गए हैं. मेरी मेरी जो सिटी का स्टेडियम है वो सोलर पावर्ड हो जाता है पूरा जब सनी डे होता है. तो इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चल रही है. तो दैट मेक्स यू फील गुड. बट द पाकिस्तानी साइड ऑफ मी गोज लाइक, यार पहले तो जर्मन, आप एक सेकंड, पाकिस्तानी आने से पहले रूसी गैस पे तो बड़ी अय्याशी की ना आप लोगों ने, रूसी पावर गैस के प्लांट तो अब तो गैस निकल आई ना पूरी साहब. अब देखें, मैं ये पुलोवर अभी क्या हाँ, टेम्परेचर बाहर 10 डिग्रीज होगा, मैंने हीटर नहीं चलाया हुआ है क्योंकि हाँ, हीटिंग यहाँ पे मतलब अभी भी इलेक्ट्रिसिटी चल हीटिंग रहा है वगैरह काफी मसला। महंगी. हाँ, मसले हैं. हम्म, तो लेकिन यार सीन ये है कि अब उसको अगर पाकिस्तानी लेंस से देखते हैं ना, अब तो आप कहते हैं यार, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ. द सिटी आई लिव इन, Freiburg, is the sunniest city in Germany. It gets an average of 55 days of sunlight in the year out of 365. कराची को देखें आप. मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि हमने, चलो अब सोलर पैनल्स लग भी रहे हैं, बहुत सारे लगा, जो लगा सकता है लगा रहे हैं, और बड़े हम फिलैंथ्रोपिक तो बहुत हैं माशाल्लाह से. पाकिस्तानीज आर वेरी गुड विद दैट, वेरी गुड विद प्रोवाइडिंग हेल्प. बट हमने इनोवेट क्यों नहीं किया उसको? और हमने स्ट्रैटेजी नहीं लोकली क्यों नहीं बनाई बनाया? ना, इनोवेट भी नहीं किया, स्ट्रैटेजी भी नहीं बनाई। स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लोग तैयार करेंगे. आपने जी बाहर से लोग ले आएंगे तो आपको इतने महंगे पड़ेंगे वो कि आप नहीं कर सकते उनको फिर अफोर्ड. आपने लोग तैयार करने जो कि उस पर काम कर सकें. आप जी मशीनें ले आते, आप तो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं पहले.
पहले तो आप जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि ये चीजें मैन्युफैक्चर हों, फिर आप उसके आगे सोचें कि अब ये एफिशिएंसी 1% 2% सोलर सेल की किस तरह से बढ़ानी है, राइट। हम लोग के पास जो, मुझे ये सोलर पैनल्स के केस में तो बहुत अजीब सा लगता है, एंड दिस इज अगेन अ वेरी नर्डी पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड, यू हैव अ लॉट मोर ओवरव्यू अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, बट ये क्या मजाक है, मतलब 60 दिन यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पे स्टेडियम पूरा पावर कर रहे हैं जी, फुटबॉल स्टेडियम ऑफ 40,000 सीटर, और वहां पे जी आपकी लोड शेडिंग चल रही है। आई डोंट नो व्हाट द स्टेट इज, बट द लास्ट टाइम आई हर्ड वाज यू कांट इवन गिव एनर्जी बैक टू द ग्रिड, यू कांट Yeah, इवन they were सेल trying to एनर्जी। change net metering के ऊपर थोड़ी थोड़ी मसले मसाइल हुए थे, but I mean, just I don't, I think when we last met, I didn't share the statistic with you. Maybe I did, but for the audience as well, over the last few years, this is Amar Khan's favorite stat, so I'm stealing it from him. I've stolen it from him many times now. You can go on Google and look at this. Per capita energy consumption in Pakistan over the last few years has remained flat. And Amar's argument is that no society can develop with flat per capita energy consumption when it's developing. Agar aap developed hain or advanced industrialized hain, so it makes sense, efficiencies kick in, population decline hai, blah, blah, blah. Makes sense, you know, per capita energy efficiency aapki kick in ho rahi hai. But if you're a Pakistan, there is no reason for you to have 5, 6, 7 years of flat per capita energy consumption, because that basically means cheap energy is not available, and if cheap energy is not available to human beings, then they can't progress in a modern society. They can't build a modern society without cheap energy. Yeah. तो इनोवेशन तो दूर की बात है, अब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ही पहुंच जाएं, पहले तो आप लोकल बनाना तो शुरू करें ना, Yeah. यू नो आपने कुछ उस बनाने के, उसमें हमारे ही एक दोस्त हैं जो कि म्यूचुअल फ्रेंड जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, उनकी कोई वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो यूसुफ आया इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ में है उन्होंने, पॉडकास्ट हाँ पे, लगा हुआ है वो, लगा हुआ है वो, हाँ सीधा राइट बंदा है. एग्जैक्टली, तो यूसुफ जो है वो लगा हुआ है, और वो ही बिलीव्स इन इट, दैट्स व्हाई लगना का मतलब यही होता है ना कि आपने एक चीज में बिलीव किया हुआ है। तो ऐसे लोगों का माइंडसेट कहाँ से आता है, इक्का दुक्का अगर निकल रहे हैं, मतलब 30-40% जो यूनिवर्सिटी से लोग निकल रहे हैं, उनका ऐसा माइंडसेट क्यों नहीं है, यू Yeah, नो। yeah. मेरे केस में यू नो इट्स लाइक, जब इकरा में था उस वक्त, दिस इज फ्रॉम द 2000s, तो कराची वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेस। कराची में जो उस वक्त गैंग वॉर्स का सीन वगैरह था, मैं लूटा हूँ, तुम्हें पता भी है कि बहुत दफा ये गन पॉइंट, ये वो स्नैचिंग अब भी हो Yeah. रही है। तो एक रीजन मेरा ये भी था कि जी सिक्योरिटी यहाँ पे भी, मतलब इट टुक मी अ व्हाइल कि यार सड़क पे हूँ तो फोन निकाल के ना चलूं, यू हाँ, नो, लेकिन फाइबर्ग ट्रॉमा में लेके सबसे बड़ा घूमूंगा। क्राइम क्या है? बाइसिकलें चोरी होती हैं, राइट? यू टोल्ड मी. बाइसिकलें तो बहुत दबा के, कुछ और चोरी नहीं होता, बाइसिकलें चोरी होती हैं, साइकिलें और चोरी हो रही हैं. और बाइसिकल चलाने वाला बादशाह होता है, वो ना पैदल वाले का ख्याल रखेगा ना गाड़ी वाले का, वो बादशाह है वो आपका। मोटरसाइकिल वाला है पाकिस्तान का. एग्जैक्टली। अच्छा, आखिरी सवाल इस पे, अगेन गोइंग बैक टू दैट रिसर्च व्यू एंड you know that lens that you have in terms of academia. What does it take to have a solid ecosystem? You mentioned some of this stuff, including journals, international journals. Like, I know you don't follow Pakistan that closely on the academic side in particular, but given the undergrad experience, given Iqra University and how you were taught there, etc., like, if there were to be some things, let's say the HEC chairman were to be like, यार बताओ कि हम क्या कर सकते हैं to bolster our research capacity at the higher education level, what would you like them to start doing? जितने आपके इंजीनियरिंग साइंसेज हैं एटलीस्ट, या और आप उसमें प्योर साइंसेज भी देने, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, लेकिन हमें इंजीनियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। आपने उनमें एक, स्टार्टिंग विद जर्नल्स, स्टार्टिंग विद, यार पेपर पढ़ना कैसे है, अब एक पेपर पढ़ना, मतलब मेरा लिखा हुआ पेपर आपको मुझे समझाना पड़ेगा, इवन दो आप you are an expert in your own field, but you're not an expert in my field, and this is Yeah, what I I don't know the mentioned. methodology Yeah, and the scientific method एग्जैक्टली related एक to तो your field. एग्जैक्टली और उस साइंटिफिक मेथड को पढ़ाना तो बिल्कुल ही कोर चीज़ है, ठीक है, वो किसी हद तक होता भी है, कि जी साइंटिफिक मेथड है क्या चीज़, हम उस पे हमने ऐसे ही नहीं मान लिया कि जी E = MC², हमने उसको टेस्ट किया है, उसको उसको 1000 लोगों ने वेरीफाई किया है,
इंडिपेंडेंटली अलग अलग कंडीशंस में, कहीं गर्मी में लैब, कहीं सर्दी में। फिर उसके बाद एक जी एक peer reviewed that's the closest thing we have to a method that can reveal the truth to us, whatever that is, right? तो आपने एक तो ये कराना है, साइंटिफिक मेथड शुड बी टॉट बेटर। दूसरा आपने एक्सपोज करना है कि दुनिया में रिसर्च में क्या हो रहा है। वो जो आपका स्टूडेंट है सॉफ्टमोर ईयर के बाद अगर वो जर्नल्स पढ़ना नहीं शुरू करता तो दैट्स अ ट्रेजेडी, बिकॉज अगर आप जर्नल्स पढ़ना शुरू करेंगे तो you as a student will also realize by the end of your bachelor's if you want to go to academia or not, right? You don't pick this path of academia by, you know, because you want to earn money, right? This is not a path for a quick buck. This is a path of frustration. मैं jokingly आपको भी बताता हूँ कि my job is to make 100 mistakes in the lab and then I get one thing right and then I publish on it, right? ये मैं एक बहुत ही extreme case इस तरह से बता रहा हूँ, लेकिन that what I publish is also अभी LK99 वाली बात हमारी हुई थी जब मैं आपको विजिट हाँ, कर रहा एक्सप्लेन दैट, मैं पूछने ही वाला था। LK99 जो कि अगेन एक्सप्लेन फॉर दोज हु मे नॉट रिमेम्बर, क्या स्कैंडल था ये? This is a very good example of what I would term not pseudoscience really, but flawed approach to science, flawed approach to doing science। कि आपने एक रिजल्ट देखा, उन लोगों ने, कोरियन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने एक रिजल्ट देखा कि जी रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिव बिहेवियर है। सुपर कंडक्टर क्या है? ऐसी एक तार जो कि जब जितना भी करंट उसमें डाल दो कभी गर्म नहीं होगी, राइट? वेरी सिंपली स्पोकन, अगर वो गर्म नहीं होगी तो आपकी लॉसेस नहीं हो रहे हैं। आपने यहाँ से जो एनर्जी भेजी एक तरफ से, वो दूसरी तरफ बगैर किसी लॉस के, हीटिंग लॉस के, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो गई। अगर आपकी वो कोई लॉन्ग रेंज वायर है जो कि बहुत, और आसान अल्फाज में, इवन फॉर द फोक्स दैट डोंट फुली गेट इट, अगर आप अपने फोन को चार्जर में लगाएं और थोड़ी देर बाद उसके पीछे हाथ लगाएं तो वो गर्म होगी, क्योंकि उसमें एक तरह से यही फिनोमेनॉन हो रहा है। जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, जिस चीज में से भी ट्रैवल करती है, जैसी भी तार हो, कुछ भी हो, वो या बैटरी में स्टोर हो रही है, वो हीट में उसकी कोई परसेंटेज एनर्जी कन्वर्ट होती है, और ये होती है उसकी एफिशिएंसी, राइट? वो बैटरी की चार्जिंग एफिशिएंसी होगी, एक ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी होगी। वो हमेशा आप उसको, इसीलिए कॉपर की वायर बनती है, प्लास्टिक की नहीं बनती है, राइट? या स्टील की नहीं बनती है। स्टील की बनती है लेकिन वो सिरिया होता है, वो बिल्डिंग को खड़ा करता है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकालते, क्योंकि इवन अ लिटिल बिट ऑफ एफिशिएंसी लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन बॉयज ने क्या किया? इन बॉयज ने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब सुपर कंडक्टर इज अ क्लास ऑफ मटीरियल विच हैज क्लोज टू और इक्वल टू जीरो रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होती है, इसको आप कम करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन ये मटेरियल्स आपको सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो के पास मिलते हैं, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये बिहेवियर नजर आता है, राइट? अब आपने उसको विच इज ऊपर लाना, प्लेनेट अर्थ पे कहाँ मिलेगी ऐसी जगह? नहीं है, नहीं है, कोई नहीं कोई है ऐसी ऐसी जगह, कोई नहीं है। इससे स्पेस में नीचे भेजना टेम्परेचर पड़ेगा। -273.16 इज एब्सोल्यूट जीरो। इससे नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर एग्जिस्ट ही नहीं सकता, करता। ओके। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, राइट? अपर लिमिट भी है टेम्परेचर की, लोअर लिमिट भी है यूनिवर्स में, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड वेरीफाइड फिजिक्स, लाइक वेल एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, तो अब आपने बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम आपके सामने आ गया एज एन इंजीनियर कि यार ये जो सुपर कंडक्टर इतना नीचे है, अब मुझे इतना ठंडा करना पड़ेगा। लिक्विड नाइट्रोजन से मैं कभी कभी काम करता हूँ जब अपने मटेरियल को ठंडा करके उसको टेस्ट करना होता है। लिक्विड नाइट्रोजन जाती है -192 डिग्री सेल्सियस, राइट? वो पूरी ऐसी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारे वो कॉन्सर्ट्स में चल रही होती है, वो अराउंड -100 तक जा सकती है, बल्कि उससे भी कम, यानी कि ज्यादा क्लोजर, लाइक हॉटर देन -100। बट माइनस लिक्विड नाइट्रोजन -190 तक जाती है, उसमें हम टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन -270 तक किसी गैस को, ऑक्सीजन को भी आप फ्रीज कर दें वगैरह, तो भी वो उधर तक नहीं पहुंचते, बहुत मुश्किल होता है टेम्परेचर लाना। इन बॉयज ने बहुत अच्छा चैलेंज उठाया। इन बॉयज ने कहा जी हम रूम टेम्परेचर की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम अलग अलग मटीरियल्स, एलॉयज को, मतलब एक आयरन बेस्ड, 70% आयरन है, 30% क्रोमियम डाल दिया, निकल डाल दिया, ये आपका स्टेनलेस स्टील होता है मोर और लेस। उसमें आप ट्वीक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे मटेरियल्स को चेंज कर रहे हैं, तो आप उसका बिहेवियर में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या चेंजेस। तो इन लोगों ने रिसर्च पब्लिश की अपनी, कि जी हमारे मटेरियल जो है वो रूम टेम्परेचर पे वेरी क्लोज टू, उसकी सुपर कंडक्टिव, वेरी क्लोज टू जीरो रेजिस्टिविटी आ गया। पब्लिश कर दिया इन्होंने। लेकिन इधर जो अच्छा, और ये हड़ाउड़ी मची है, पीयर रिव्यूड पब्लिशिंग थी क्या था ये? व्हेन यू से नहीं ये पब्लिश? प्रीप्रिंट था,
Preprint था. Okay. So it Preprint था. wasn't like a It was peer-reviewed up for journal. reviews. Okay. It was up for reviews. Okay. अब इसमें कसूर किसका है? I'm not sure. उन लोगों ने खुद रिलीज किया इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में, या उन्होंने जिन्होंने पीयर रिव्यू नहीं, जो उनका जर्नल था उन्होंने किया, किसी ने बाद निकल आई बाहर कि भाई ये पेपर आया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये प्री प्रिंट है, इस पे कोई अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन उसकी हड़ाउड़ी फौरन मच गई, पॉपुलर साइंस आ गई सामने. इसकी पॉपुलर चेकिंग नहीं साइंस हुई थी और लोगों ने मानना शुरू कर दिया. एग्जैक्टली, पॉपुलर साइंस लाइज समवेयर बिटवीन ओ एप्पल का नया इवेंट आया, आईफोन रिलीज किया है, और ऐसी चीजें, ये चीजें बहुत बहुत आगे जाके इनको प्रोडक्ट्स में आना चाहिए. पॉपुलर साइंस लिव समवेयर इन बिटवीन दैट, बट व्हेन दे गो टू क्लोज टू दैट कटिंग एज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स मे हैपन. तो हुआ ये यार, मैं इस फील्ड में खुद एक्सपर्ट नहीं हूँ, इन एलॉयज में एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैंने जाके वो प्रीप्रिंट भी पढ़ा. मैंने एक चीज नोटिस की, जो कि बाद में मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो करता हूँ, सम प्रोफेसर्स हु एक्चुअली टॉक अबाउट पेपर्स दैट गेट रिलीज, सारे इस पे भी चढ़ गए, सब लोगों ने इसको मतलब पेपर को नंगा किया. एंड दिस इज व्हाट यू डू एज अ साइंटिस्ट एज वेल. मैं जब पेपर लिखता हूँ जिसमें ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो कि मुझे लग रहा है बहुत ही क्रेजी है, तो मैं अपने वर्डिंग को भी ऐसे ही लिखता हूँ कि यार ये मुझे नजर आया, प्लीज प्रूव मी रॉन्ग. हड़ाउड़ी नहीं मचाते हम लोग कहते हैं यार ये आप मुझे प्रूव मी रॉन्ग बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ आई कुड बी रॉन्ग, बट आई एम प्रीटी श्योर आई शुड बी रॉन्ग. Right? We're very careful. We're very skeptic about our own thing. इन लोगों की वर्डिंग थोड़ी सी इस तरह की थी भी नहीं. तो उन्होंने ये देखा, एक YouTube वीडियो में उसने दिखाया कि जो वाई एक्सिस पे जो स्केल लगा हुआ है ना, जिसमें जितना नीचे जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस कम है, उसमें द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर का जो मार्क होना चाहिए और ये जो जीरो रेजिस्टेंस है उसके बीच में कोई जगह ही नहीं है. मतलब जो प्रिंट किया है उसके पिक्सल्स में ही जगह नहीं है. तो उन्होंने जो जो ग्राफ बनाया, अपने प्लॉट किया डेटा को, उसमें उन्होंने इतना गंदा स्केल लिया कि दे कांट इवन टेल द डिफरेंस इसे बिटवीन कॉपर अरीबा एंड शायद, जीरो. जो मेरी दोस्त है, वो कहती है चार्ट क्राइम कमिट किया. Yeah, chart crime, that's a very good term. Yeah. Yeah. So that's like, it's so Because irresponsible. ideally it would be up there, right? And then zero would be like, there would be a हाँ, big अगर gap फर्ज in. करें वो जीरो है और कॉपर 50 पे बैठा हुआ है, लेकिन आपका स्केल 0 से 100 तक नहीं जा रहा कि कॉपर बीच में हो, आपका स्केल जा रहा है 0 से 1 मिलियन तक, तो 50 कहाँ होगा, बिल्कुल जीरो के पास होगा. तो इट्स लाइक, और उनकी वर्डिंग भी इस तरह थी कि जी हमने जी निकाल लिया ये. अब वो there's, I wouldn't call them bad actors in terms of criminals or whatever, but ऐसी bad science होती है दुनिया में. एक चीज इस पे मैं, related to your previous question as well, beware of pseudoscience. Learn to think critically. Learn to look at things from a very skeptical point of view. You want it to be true. I want it to be true. I want a superconductor at room temperature. I want graphene to be made in meter big chunks. ग्राफीन भी एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस क्लोज टू जीरो है, वो स्ट्रक्चरली भी इट्स अ सुपर मटेरियल, राइट? लेकिन वो आप कितना आसानी से बना सकते हैं. आप अपना ग्राफाइट होता है ना जो पेंसिल का, उसके ऊपर टेप लगाएं और टेप को ऐसे उतारें तो आपकी टेप पे थोड़ा सा जो होगा वो ग्राफीन होगा. इट्स 1 एटॉमिक लेयर थिक, लेकिन उसको हम स्केल अप नहीं कर पाए. 15-20 साल हो गए, स्केल अप नहीं हो पाया वो, कि उसके इतने बड़े बड़े चंक्स बने या उसके स्लैब्स बन जाएं या उसको हम ब्रिक्स में बनाएं या उसको हम वायर्स में बना सकें कुछ. These are all engineering challenges. These are not scientific challenges. We know what it is. We know what it does. लेकिन अगर कोई इस तरह की बात क्लेम करता है कि हमने जी बना लिया, तो take it with a pinch of salt, because you want your experts to first peer review it. So from the scientist side, it is irresponsible अगर उन्होंने रिलीज किया है. And from the popular science, जो journalists होते हैं, वो जो कहते हैं ना आधी नॉलेज, आई डोंट नो ये उर्दू में कहते हैं, जर्मन में, ये भी नहीं याद मुझे, लेकिन आधी नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है. किसी चीज को आप पूरी तरह नहीं समझते हैं और आप जो है वो उस पर यू जंप टू कंक्लूजंस, यू हैव अ कंफर्मेशन बायस टुवर्ड्स थिंग्स, एंड दैट कैन गेट वेरी डेंजरस इफ यू आर जर्नलिस्ट. मैं शॉर्टली कहूंगा वन मोर थिंग व्हिच आई लाइक सेइंग. पीएचडी करने से जो मैंने एक चीज जो सीखी है, जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मैंने ये सीखा है कि मुझे कितना नहीं पता है. मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई है थोड़ी बहुत कि मुझे कितना नहीं पता है. इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग टू नो थिंग्स, आई जस्ट शाय अवे. आई जस्ट से कि यार इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक कि जी मैं कह रहा हूँ कि जी ऐसा हो रहा है. दैट गेट्स वेरी डेंजरस, एंड दिस पॉपुलर साइंस इज समथिंग आई गेट रियली क्रिटिकल अबाउट इन दिस. No, I think your point on skepticism and how critical that is to the scientific method is so important, right? I mean, it's one of those things that on this podcast, when you said you would like something to be true, I would, for example, love for it to be true.
आप पैसा प्रिंट करते रहें इकोनॉमी के अंदर और उससे इन्फ्लेशन ना हो और आपकी करेंसी भी ठीक रहे और मईशत भी ग्रो करे. आई वुड लव फॉर इट टू बी ट्रू बिकॉज इट वुड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स in many economies, including in Pakistan. But the science says that's not how economies work. And if the Exactly. peer-reviewed data says so, and if the peer-reviewed research says so, then you have to convey that message. Like in a lot of times, because scientific method is, especially in the social sciences, more so than anything else in Pakistan, is so ignored. लोग कहते हैं देखें जी ये रियलिटी जो ये वाली जो चीज़ है ना ये पाकिस्तान की रियलिटी से बरक्स है. इट डजंट फिट. भाई पाकिस्तान भी मुल्क है, सोसाइटी है किसी और मुल्क की तरह. वहां भी करेंसी चलती है जैसे किसी और मुल्क में चलती है. मतलब ठीक है कॉन्टूर्स डिफरेंट होंगे, स्केल डिफरेंट होगा उसके इफेक्ट का, लेकिन ब्रॉडली एक कंसेंसस है. एंड आई थिंक इवन इन द पॉलिसी सर्कल लाइक सो मैनी टाइम्स आई एंड अप इन कॉन्वर्जेशन जहाँ लोग ओपिनियन दे रहे होते हैं बट इट्स नॉट बेस्ड ऑन any review of peer reviewed research. And I'm just like, there is peer reviewed research. Here's the, go to scholar.google.com, put in Pakistan inflation monetary phenomenon, and you will get peer reviewed research by very credible people who know what they've written, and it's peer reviewed. And again, uske andar bhi, of course, as you know, many people don't. I've learned it from other experts who are in their field. Not all journals are the same, so you kind of have to know कि किस journal का क्या level है, कहाँ वो पब्लिश होता है, उस पर किस तरह के लोग पब्लिश करते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. एंड यू फाइंड इट एंड यू रियलाइज कि ओके that's the standard. That should be the standard that informs science, policy making, analysis of what's going on in a country, whether it's the social sciences, the hard sciences, the biological sciences, whatever that might be. But I think we need to teach people more of that skepticism at heart because we would बहुत all love. जरूरी है because yeah confirmation biases can lead to disaster like this because आप चाहते हैं ना एक चीज होना. अब सोशल साइंसेज में भी आपकी पूरी एक मईशत तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. मैं तो जी फिजिक्स के लॉज बड़े सिंपल होते हैं एट द एंड ऑफ द डे. Yeah. सही ना, कुछ इक्वेशंस हो गई. आपका जो सिस्टम है जो आप देख रहे हैं वो तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें आप अगर रिलाई नहीं करते एग्जिस्टिंग डेटा पे तो you're just it's a recipe for disaster. Yeah. Well, this has been a fascinating conversation. Thanks for taking out the time today. And before I let you go, you know this question already. What are 2 or 3 books you would recommend to the audience? So yeah, I thought about that, and I wanted to give a different, spectrum of genres in the books. एक तो मेरी field से, there's a professor, I think he's retired now from Cambridge, Michael F. Ashby, and he has done amazing work on the field of material selection for sustainable development, and that is the title of the book. कि जी आप materials को किस तरह select करें और उनसे चीजें बनाएं जिससे आपकी sustainable development हो. और ये माशरे की तरफ जाती है बात. तो it's a in between engineering and social sort of thing. This is also one of the topics we teach in our program. The second is a book that analyzes psychology that I read recently and that really touched me deeply and helped me grow on a personal level. It's called No Bad Parts by Richard Schwartz. Exactly. And the third is fiction. It's a fan fiction of Harry Potter. And it came out I in knew there was going to be a 2010. Harry Potter book somewhere along in this list. Yeah, I was I knew thinking it. of I was thinking The Witcher, which I'm a big fan of. So I'll plug that in as well. But Harry Potter and the Methods of Rationality. It's a fan fiction. It's a parallel universe of the world of Harry Potter. And it's one book, which पूरा उसमें हैरी साइंटिस्ट होता है. बहुत मजे की किताब है और उसमें आप साइंटिफिक मेथड काफी देख सकते हैं. जादूगर को साइंटिस्ट बना दिया. पूरा हॉगवर्ट्स भी है उसमें, मैजिक भी है, लेकिन वो मैजिक को साइंटिफिक मेथड के थ्रू देख रहा होता है. एंड दिस इज अ साइंटिस्ट, आई फॉरगेट हिज नेम, आई थिंक ही इज रशियन, और वो खुद एआई पे बड़ा काम किया है इस बंदे ने और पिछले कुछ डेकेड से. एंड ही रोट दिस बुक हैरी पॉटर एंड द मेथड्स ऑफ रैशनैलिटी. Apart from that, I gain a lot of knowledge about different engineering topics through YouTube. So maybe we can talk about putting a couple of links to some of my favorite science and engineering YouTube channels. No, for sure. I'll put those in, and in fact, I will also put in. I did not mention up top. ये जो listeners में से जो gamers हैं, boys and girls, बिलाल जो है वो एक अपना गेमिंग चैनल भी रन करते हैं. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. आजकल जो है वो गॉड ऑफ वॉर चल रही है और स्टारफील्ड चल रही है.
और एक और भी चल रही है, राइट? क्या? Horizon Forbidden West. So Horizon me Forbidden and West. one of my close friends here, we play together, और फिर वो भी अकेला खेलती हैं और मैं भी खेलता हूँ अकेला. तो आपको इस सिनेरियो में मैं अंग्रेजी बोलता हुआ गेम खेलता हुआ भी नजर आऊंगा. तीन अगर आप गेमें चाहें चल तो. रही हैं इस वक्त, तो वो भी चेकआउट करें इफ यू लाइक वाचिंग वीडियो गेम्स एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स. It's quite fun. So on that note, thank you, Bilal, for taking out the time. I will let you go on a Thursday night now in Germany, but really, really appreciate you joining us today. I love talking to you. Thanks so much for having me. Thank you.